Friends, so in previous class I was explaining the some question from exercise 8b also. I hope all of you have completed exercise 8a. Okay, so 8b till 5th I have explained and I was given to solve you. I hope you have done. And question number 4, there is the some mistakes in the book, that's why I done some problems. There is the 2/5 is given, but in other books it is given 4/5. So I was send its solution afterwards in the WhatsApp also. Next, question number 6. Today, question number 6 from exercise 8b. Three numbers are in the ratio of 4 is to 5 is to 6. If the sum of the largest and smallest equals the sum of third and 55, find the numbers. Okay, so three numbers are in the ratio of question number 6. Three numbers are in the ratio of 4 is to 5 is to 6. Okay, so there are these three numbers. So can you tell what is the smallest number? अब देखो ये रेशियो में होता है तो हम कोई कांस्टेंट लेते हैं, लाइक x लेंगे. तो ये जो थ्री नंबर हुआ, फर्स्ट नंबर देखो यहाँ होगा हमारा फर्स्ट नंबर. व्हाट इज फर्स्ट नंबर? आई कैन टेक 4x, है ना. सेकेंड नंबर विल बी 5x. थर्ड नंबर कैन बी टेकन, थर्ड नंबर विल बी 6x. So look in this question, what is given? Sum. If the sum of the largest and smallest equals largest, what is largest? 6x and 4x. So according to question, 6x plus 4x, its sum is equal to the sum of third number, remaining number, जो भी हमारा remaining number है 5x plus 55 के equal है. This is equal to 5x plus 55. 5x plus 55. So how can we solve? 6x plus 4x, that is 10x minus 5x is equal to 55, right now. ये देखो ये फाइंड आउट हुआ 10x minus 5x. What is 10x minus 5x? 10x minus 5x is equal to 5x and 5x is equal to, I got 55, therefore x is equal to 55 divided by 5, so we got 11. Therefore numbers, अभी देखो फर्स्ट नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर, what is the first number? First number is 4 into 11, so therefore 44. Second number, what is second? Can you tell what is second number? Second number, देखो ये second number is equal to 5 into 11, so it is 55. And third number will be 6 into 11, so it is 66. अभी देखो, you can verify your answer. फर्स्ट और इसका सम देखो कितना आया 110 और 55 plus 55 it is also 110. So hence you can verify your solution also, right now. So this is next question number 8. I will explain next question number 8. Two numbers are such that the ratio between them is 3 is to 5. If each is increased by 10, the ratio between the new numbers so formed is 5 is to 7. Find the original numbers. Okay, so next question number 8. Two numbers are in the ratio. Question number 8. Two numbers are in the ratio of 3 is to 5. Two numbers are in the ratio of 3 is to 5. ये marker में some problem है, so I will use the chalk here. So I can use the chalk, no problem at all. Question number 8. Two numbers are in the ink नहीं है marker में, therefore I am going to use the chalk here. Two numbers are in the ratio of 3 is to 5. देखो ये 3 is to 5 के ratio में है. So what is the number? You can tell first number can be taken multiple of 3. So इसको क्या नोट कर सकते हैं 3x. और देखो second number क्या होगा? Second number will be 5x. देखो ये 3x और 5x हमारे required number हुए. 3x and 5x are the required number. Okay, what is given again? If each is increased by 10, इनको 10 से increase कर देना. तो first क्या हुआ 3x plus 10 and what is become second 5x plus 10. If each is increased by 10, then ratio between the new numbers so formed is 5 is to 7. अब इनका ratio लेना है. So 3x plus 10 divided by 5x plus 10 is equal to how much given? Is equal to given 5 is to 7. Ratio of the new number is 5 is to 7 according to the question. This is came
from the question. ऐसा क्वेश्चन में गिवन है according to the question. Now how can you solve? By doing the cross multiply. Cross multiply करेंगे. 7 3 जा 21x plus 7 into 10 70 is equal to 5 into 5x, that is 25x plus 5 into 10 50. देखो ये 20, इसको ट्रांसपोज करते हैं और 70 50 ट्रांसपोज दैट साइड. 70 minus 50 is equal to 25x minus 21x. 70 minus 50 20. 20 is equal to how much? 4x. Right now, so x is equal to 20 by 20 upon 4 and 20 upon 4 is equal to 5. So therefore we got it is 5. देखो ये 5 हो गया है ना. x is equal to 5. तो आंसर में क्या देना होगा? नंबर. Therefore first number. Therefore first number. What is first number? First number is 3 into x. So 3 into 5, that is 15. And what is second number? Second number will be 5 into x ना. 5 into 5, that is 25. You can verify. अभी देखो इसका रेशियो देखो 15/25. तो क्या आएगा? 3:5. और अगर इसमें 10 ऐड करो तो 25/35. 25/35 5 से कैंसिल करो 5.7 मिलेगा. करेक्ट ना? सो इन दिस वे यू कैन वेरीफाई योर आंसर आल्सो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Next this question number 10. And look, question number 10 is, what is given? Question number 10, it is given, find 3 consecutive even numbers whose sum is 234. Find 3 consecutive even numbers. Consecutive even number, you know, first जैसे first even number क्या होता है 2, second क्या होता है 4, next क्या होता है 6. तो 2 4 6 this type of numbers are called the consecutive even number. So even number, if first even number हमने x ले लिया तो next कब आने वाला है? x plus 2 होगा. 2 प्लस करते हैं, 2 था तो देखो next 4 हुआ, 2 ऐड हुआ, फिर 4 के बाद क्या हुआ? 6 हुआ, 6 के बाद क्या होगा? 8. तो 2 2 के डिफरेंस में इवन आएगा, है ना. अल्टरनेट नंबर लाइक 1 इज ऑड, तो नेक्स्ट ऑड कब होगा? 3, मतलब 2 ऐड करना होगा. तो सिमिलरली लेट द 3 consecutive even numbers be x. तो नेक्स्ट क्या होगा? x plus 2. 3 यार 2 3 ना. व्हाट में भी थर्ड x प्लस, यहाँ 2 फिर से प्लस करो, x plus 4. तो क्या हो सकते हैं 3 consecutive even number? x plus 2 and x plus 4. So according to question its sum is given. देखो इसके sum given है. According to question, sum of 3 consecutive even numbers. Sum of 3 consecutive even numbers are given. How much given? 234. 234. देखो x plus 2 x plus 4 is equal to 234. अभी देखो x plus x plus x. How much? 3x. 3x 4 plus 2 6 ना, plus 6 is equal to 234. अभी देखो 3x is equal to 234 minus 6, राइट ना. माइनस करो, कितना आने वाला है? 228 by 3. अभी देखो 3 से डिवाइड करो, x फाइंड करो. 3 7 जा 21, 3 6 जा, x is equal to 76. फर्स्ट नंबर, so therefore the consecutive 6 76, फिर 2 प्लस करो 78, next is 80. These are the 3 required consecutive even numbers. Okay, this is question number 10. Next question number 12. I will explain next question. Question number 12. Question number 12. What is given? 12. 12th is given. The digit in the tens place of a 2-digit number is 3 times that in the unit place. If the digits are reversed, the new number will be 56 less than the original number. Find the original number. Check your solution. Important. Good question. The digits in tens place of a 2-digit number is 3 times that in units place. जो tens place का number है वो 3 times है ना. It is 3 times that in the unit place. तो पहले हम लोग unit place. देखो 2-digit number में always इस type का number होता है. This is called unit place and this is called tens place. तो unit place and, और ये number form कैसे होता है? देखो number form कैसे होता है? tens place को 10 से multiply करते हैं, unit place को 1 से multiply करते हैं. देन ये नंबर हमारा 32 फॉर्म होने वाला है. इन दिस वे हमको लेट करना होगा. 3 into 10 plus 2, तो देखो ये हुआ 30
plus 2, you will get 32. So dear student, try to understood this. First 2 digit number, ये यूनिट प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, ऑलरेडी यू नो. 100 प्लेस नेक्स्ट होगा 3 डिजिट में ये. और देखो यहाँ पे नंबर फॉर्म कैसे होता है, यूनिट प्लेस इनटू वन, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया. टेंस का प्लेस वैल्यू 10 होता है तो 3 into 10, 30 plus 2 तो नंबर हो गया 32. इसी अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है. फर्स्टली आई विल लेट इट्स यूनिट प्लेस. लेट x be the unit place, be the unit place of the number. नंबर का यूनिट प्लेस हमने x ले लिया. व्हाट इज टेंस प्लेस? टेंस प्लेस, therefore it's tens place, therefore tens place, therefore tens place. Can you tell what is tens place? Tens place is thrice ना. tens place is 3 times of unit place. तो ये क्या हुआ? thrice of x हुआ, 3 times of unit place, so that is 3x. so therefore original number, therefore number, original number हम बनाते हैं. original number, original number. Can you tell original number? देखो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि ये जो टेंस प्लेस है उसको उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो और फिर यूनिट प्लेस को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो. 3x into 10 plus x into 1, so that you will get 30x plus x. आंसर हुआ 31x. You get 31x right now. Okay. If the digits are reversed, the new number will be 36 less than the original number. देखो न्यू नंबर कैसे हमको न्यू नंबर मिल रहा है. Firstly, we'll find out new number. New number is obtained by reversing its digits. जैसे हमने एग्जांपल दिया था 32, तो अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा 23. करेक्ट ना. तो सिमिलरली हियर यहाँ डिजिट्स को रिवर्स कर दो, मतलब यूनिट को टेंस बना दें, टेंस को यूनिट बना दें. इसका मतलब x हुआ टेंस प्लेस और 3x हो गया यूनिट प्लेस. तो नंबर क्या होना चाहिए? x टेंस प्लेस हुआ 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय 1, बिकॉज इट बिकम्स नाउ यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस का प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्लेस वैल्यू 1 है तो 1 into 3x and 10 into x. तो देखो 10x plus 3x, how much? 13x. Then look what is given. Difference. अभी देखो the new number will be 36 less than original number. New number will be 36 less than original number. इसका मतलब ओरिजिनल से अगर न्यू को माइनस करें तो 36 आना चाहिए. According to question 31x minus 13x should equal to 36. That is from where? From according to question we got it. अभी 31x minus 13x, 31 minus 13, how much you can get? 18x is equal to 36. Right now, therefore x is equal to 36 by 18. We got 2. x is equal to 2. अभी देखो x find out हो गया 2. And if x is equal to 2, अगर ये x हमारा 2 find out हुआ, therefore what is our original number? Therefore we want original number. Therefore original number. Original number. देखो यहाँ हमारे पास है original number. Original number is 31x. तो क्या होना चाहिए? 31 into 2. That is 62. ये देखो original number हुआ 62. और न्यू नंबर क्या हो सकता है? 26. 62 से 26 माइनस कर दो, यू विल गेट ना. 62 से 26 अगर हम माइनस करें तो 62 से अगर हम 26 माइनस करें, देखो यहाँ होगा 6 एंड हियर 36, यू विल गेट 36. यू कैन वेरीफाई योर आंसर आल्सो. सो आई होप यू अंडरस्टूड. राइट. क्वेश्चन नंबर ये था 12. क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 14. Next, question number 14. So question number 14 is given. In a fraction, twice the numerator is 2 more than the denominator. If 3 is added to the numerator and to the denominator, the new fraction is 2 by 3. Find original fraction. In a fraction, okay, twice the numerator is 2 more than the denominator. Twice the numerator is 2 more than the denominator. Twice the numerator is 2 more than the denominator. Okay. So sometime क्या होता है? We are getting confusion. अगर हमको confusion हो तो पहले 2 वेरिएबल लेकर के लेट कर लें और फिर उसको चेंज कर सकते हैं. In this way also you can solve. तो sometime ये हमको easy हो जाता है. जैसे 14 में हमने fraction को लेट कर लिया. Let fraction, let original fraction be x upon y. हमने देखो ये सपोज के लिए x upon y. फिर according to the question, very carefully, according to the question you need to write. तो क्या given है? In a fraction, twice the numerator. What is twice the
न्यूमरेटर, तो क्या होना चाहिए ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर, व्हाट इज न्यूमरेटर x, तो क्या मिला ट्वाइस ऑफ x इज 2 मोर देन द डिनोमिनेटर, ये जो है ना 2 मोर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 2 मोर, तो ये फाइंड आउट हुआ 2x इज इक्वल टू 2 मोर देन डिनोमिनेटर, so twice numerator is 2 more than denominator, therefore y can be find out ना, y देखो हमको find out हो सकता है 2x minus 2, okay y we got y क्या हुआ 2x minus 2, फिर हम लोग देखते हैं if 3 is added to the numerator and the denominator, if 3 is added, how much added 3, according to question if 3 is added to the numerator and to the denominator, both में add करना है, देखो यहाँ भी add करना है और यहाँ भी add करना है, then according to the question न्यू फ्रैक्शन इज 2/3, तो ये हमारा न्यू फ्रैक्शन क्या होगा 2/3 हो जाएगा, और फिर यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे, है ना, सो ये है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ आई विल पुट हियर द वैल्यू ऑफ y, अब यहाँ y के प्लेस में हम क्या रखने वाले हैं, एट द प्लेस ऑफ y आई विल पुट 2x minus 2, तो देखो ये पुट करते हैं x plus 3, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इफ यू वांट यू कैन पुट इट ना, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और वहाँ पे पुट कर लेना, इन दिस वे आल्सो यू कैन डू, तो थ्राइस ऑफ x plus 3 is equal to twice of y plus 3, y की वैल्यू पुट करते हैं x plus 3 मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो ये हुआ 2x 3x plus 3 3 9 is equal to twice of y की वैल्यू पुट करते हैं, what is y 2x minus 2, 2x minus 2 plus 3, so this is 3x plus 9 is equal to 3 2 to the 4x, तो ये 3 minus 2 1 हुआ, 1 में मल्टीप्लाई कर दो प्लस 2 ना, अभी 3x को ट्रांसपोज करो 2 को यहाँ लाते हैं, 9 minus 2 is equal to 4x minus 3x, राइट ना, 4x minus 3x, देखो x is equal to we got x is equal to कितना मिला, x is equal to 7, x we got x is equal to 7, so if x is 7, okay so can you find out y, अभी देखो y क्या होगा अगर x 7 हो जाए, तो y क्या फाइंड आउट हुआ, if x is equal to 7 so you can get y is equal to twice of x, twice of 7 minus 2 means 14 minus 2, that is 12, so can you tell what is the required fraction, required fraction is 7 upon 12, 7 upon 12, okay, so required fraction is becomes 7/12, this is question number 14, okay you can verify your answer, इसमें 3 प्लस करो 10 और यहाँ 3 प्लस करो 15, 10/15 रेशियो होगा 5/2/3, 5 से डिवाइड कर लो ना, so this is question number 14, next question number 16, question number 16 is given, the width of a rectangle is 2/3 of its length, width of a rectangle is 2/3 of its length, width of rectangle is 2/3 of its length, देखो width को हम जनरली v से डिनोट करते हैं, और क्या बताया गया width of a rectangle is 2/3 of its length, it is 2/3 means 2/3 of L, पहले हमने इसकी अकॉर्डिंग नोट कर लिया, अभी हम L को अगर x नोट करें, if length is x then width is equal to what can we get 2/3x, तो देखो ये फाइंड आउट होगा b is equal to 2/3x can be written, okay, now look it again, it is given if the perimeter is 180 meters find the dimensions of the rectangle, perimeter is given, देखो perimeter of rectangle is equal to twice of L plus B, and perimeter of rectangle is given, how much given 180 meter, means it is given 180 meter is equal to twice of L is x and B is 2/3x, देखो यहाँ फाइंड आउट हुआ है ना, 2 को पहले ही ट्रांसपोज कर देते हैं, 180/2 is equal to, यहाँ एलसीएम टेक करेंगे, 3 एलसीएम हुआ तो 3x plus 2x/3, 2 से कैंसिल करो कितना हुआ 90, और फिर 3 यहाँ ट्रांसपोज होता है, 90 into 3 is equal to 3x plus 2x, that is 5x, no need to multiply, पहले 5 को यहाँ लाते हैं, देखो 90 into 3/5 is equal to x, 5 से डिवाइड करें कितना
कितना होने वाला है 18 into 3. So x find out हुआ. What is x? Therefore x is equal to 54 meter because that is given 180 meter. So 54 meter. अरे वो b हम find out करते हैं. L find out हो गया 54 meter. b is equal to what is 2 upon third of x. So that is 2 by 3 into 54. 18 1. 18 to the 36 meters. So that's why 36 meter. You can verify your answer. इसको plus करो. 90 उसका ट्वाइस करोगे 180 हो जाएगा. तो पेरीमीटर कितना मिलने वाला है 180 मीटर. करेक्ट ना. सो दैट वी गॉट 16th. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th इज गिवन. टू angles of a triangle are in the ratio 4:5. If the sum of these angles is equal to the third angle, find angles of the triangle. Two angles of a triangle are in the ratio 4:5. So triangle, how many angles in a triangle? 3. So two angles are in the ratio. First angle and second angle. These are in the ratio of 4:5. Right now, two angles. First and second हमने suppose कर लिया कि these are in the ratio of 4:5. So can you tell ratio? Already you know that first angle क्या हो सकता है 4 time of x, and what may be the second angle? That can be written 5 time of x. Right? If the sum of these angles is equal to the third angle, sum of these angles is equal to the third angle. So according to question, what is given? Sum of first plus second is equal to third angle. Its meaning is that what is first angle? 4x, and what is second angle? 5x. That is equal to angle 3. Therefore, what is angle 3? Can you tell? Angle 3 is equal to 4x plus 5x. That is 9x. तो देखो angle 3 क्या मिला? 9x. Right ना? So ये angle 3 को 9x फाइंड आउट हो गया. So if angle 3 is 9x, अगर ये हमारा angle 3 9x हो गया, so you know sum of all three angles of a triangle. What is sum of all three angles of a triangle? 180 degree. Right now, it is called angle sum property of triangles. We'll use that. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree. What is angle 1? Angle 1 is 4x. तो यहाँ हम रखेंगे 4x. इसको बोलते हैं angle sum property of triangle. By angle sum property of triangle. What is angle 1? 4x. What is angle 2? 5x. What is angle 3? 9x. Is equal to 180 degree. Add करेंगे तो ये वो 9x plus 9x. How much? 18x. Is equal to 180 degree. Therefore x is equal to 180 divided by 18. How much? 10 degree. तो देखो x कितना मिल गया? 10 degree. We got the value of x is 10 degree. अभी हमको x फाइंड आउट हो गया 10 डिग्री. सो इफ x is 10 डिग्री, सो आई कैन फाइंड आउट एंगल 1 कितना हुआ? एंगल 1 हुआ 4 into 10 मींस एंगल 1 is 40 डिग्री. व्हाट इज एंगल 2? एंगल 2 is 5 into 10, that is 50 डिग्री. एंड एंगल 3, हाउ मच एंगल 3? एंगल 3 9x ना, तो 9 into 10, that is 90 degree. We got 40 degree, 50 degree and 90 degree. These are the required angles. Okay, so angles we got it. This is question number 18th. Okay, so and next remaining questions, like afterwards question you need to try, and till here at least you need to complete, means till 20th question तक try करना है. I will explain in next video other questions. Okay, so try these questions. Thank you.